In different places of Jammu and Kashmir, after the death of a Kashmiri Pandit, Rahul Bhat, a government employee in Kashmir, was shot at the Tehsildar's office in Budgam district on Thursday. There was massive protest in Budgam this morning as protesters clashed with cops. Cops even fired tear gas in the air to quell the angry crowd. Bhat is the third Kashmiri Pandit to be killed in the last 6 months. Meanwhile, PDP chief Mehbooba Mufti claims that she has been put under house arrest. ऑफिस के अंदर और किसी अफसर ने इस वक्त तक कोई हाल चाल नहीं पूछा, कोई कन्वे नहीं किया। ये सिक्योरिटी का हाल है। एसएसपी बडगाम को मैं फोन कर रहा हूँ, पीसीआर श्रीनगर को मैं फोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा। ये थोड़ी है चलो गोली लगे, ऑफिस के अंदर हिट किया है, वो भी ऑफिस के बाहर नहीं, ऑफिस के अंदर है। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं क्या किसका कसूर है, क्या बोल सकते हैं इसमें। ऑफिस के अंदर की अब किस जगह हिट सेफ है। This is one of the most pathetic situations. What I have observed keenly in past 30 years, government has totally failed in rehabilitating us, at the same time in providing security. अगर government हम लोगों को यहाँ पे सेफ्टी नहीं दे सकती, हम लोगों को वेपन दे दीजिए, हम अपनी सेफ्टी खुद कर लेंगे। पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप भी देख रहे थे, हमने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई गलत बात नहीं की। इन्होंने लेडीज को इंजर्ड कर दिया, 4 लेडीज इंजर्ड हैं, 4 एब्सकॉन्डिंग, हमें पता नहीं बंदे कहाँ हैं। अभी पता चला कि इनको डिटेन किया गया। हमें ये बोले कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम निहत्तों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो सरकार का प्लान था कि कश्मीरी पंडित्स को, हिंदूज को वापस ला के It has totally failed. It is totally failure of the government. गवर्नमेंट ने किसी भी एक बंदे को सिक्योर नहीं किया है। डिमांडें 4 हैं। जब तक ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ नहीं आते, ये प्रोटेस्ट यहाँ से हिलने वाला नहीं। और हमारे 4 आदमी इन्होंने बंद किए खानों का। किस बात पर जेके पुल ने बंद किया? या तो इनकी गवर्नमेंट की चाल है, इनको बंद करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये देखिए हाल, और इसका हाल देखिए, इसके बच्चों का हाल। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारे डिमांडें हैं वो डिमांडें फुलफिल की जाए। ये तो बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी हुई। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में भी हमारे पे टेयर गैसेस फेंके जाते, ये तो एक बहुत गंदी हरकत हुई गवर्नमेंट की तरह से। हमने कोई पत्थर नहीं उठाए थे, हमने कोई गन नहीं उठाई। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट का ये नतीजा होता है? हम पे लेडीज पे लाठियां मारी गई। ये देखो मुझे जख्मी किया गया, मुझे लेडीज ने बहुत डंडे मारे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। हम इंडिया में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं हम? Mirna correspondent Pradeep Datta joining us with more information from ground. Pradeep, this is obviously a very tense situation right now, and we are playing out those pictures. What exactly is the ground situation? First, update us with what is happening right now, what action has been taken after that brutal killing. See, so far as the security action is concerned, they have already identified the 2 terrorists. One of them is Akib Gojri. He is a newly recruit of Lashkar-e-Toiba. Other one is Latif Ahmed. These 2 Lashkar-e-Toiba terrorists, yesterday, they entered inside the Tehsil office. They opened fire, killing Rahul Bhat on point-blank range, and then they fled from that area. So family members smell some kind of a conspiracy. They want one, action to be initiated against the culprits, and second, they feel that there is some kind of a conspiracy. Maybe some members in the office are also involved. Why they are saying so? Members in the office are involved. Reason being that they feel somebody must have informed that he is Rahul Bhat. Somebody must have conveyed that still Rahul Bhat is inside the office. And these 2 terrorists came from the rear side of the building. That means they were knowing that CCTV camera is not installed there. After committing the crime, they have fled from that area. Right now, the manhunt has been launched. So far as the Kashmiri Hindu community is concerned, they are quite angry, agitated. You must have seen them on streets protesting. Why? They were peacefully protesting. They wanted that Lieutenant Governor to listen to them because they wanted that adequate security need to be provided. Reason being that story of horror, death, destruction that started in 90s is continuing even today. We saw that in 90s how Tekalal Taplu was killed, Sarla Bhat was killed, Prannath Ganju was killed, Premnath Bhat was killed, and today Rahul Bhat is another victim of these Pak-sponsored terrorism. We have seen that how radical Islamists have been targeting them. We have got the family members and relatives with us. Let's speak to them how they see that Hindus being targeted, Hindustanis being targeted, because we saw one cop was also killed today. Why he was killed? Because he was with the idea of India. That's why he was targeted. Man in uniform who is already always there to take bullets on the body to safeguard Kashmir, prosperity of Kashmiris and also India. And we have got the family members. How you see, कैसे देखते हैं आप जब ये
हिंदूज को टारगेट किया जाता है। 90 में भी हमने देखा, अभी भी देखा, इस मजहब की वजह से टारगेट किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। प्रोबेबली तो वही है कि हिंदुओं को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कश्मीरी पंडित रहे वहाँ। यही है कि 90 में भी यही था कि इनको ही टारगेट करना कि एक मुस्लिम इस्लामिक स्टेट का है, उनका शायद जहन में है कि सिर्फ यहाँ वही रहे, ये बात थी। तो उस वजह से उन्होंने 90 में सबको मार डार के बाहर निकाला। तो डर के तो कश्मीरी पंडित बाहर आया। बट आफ्टर 32 ईयर्स ए लॉन्ग पीरियड के बाद वही स्टोरी रिपीट हो रही। वहाँ जो वही बच्चे जाते हैं उनको वही बात है कि वही टारगेटिंग की, कि वो नहीं, उनको पसंद नहीं कि हम वापस आ जाए। मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, जितने भी बाकी फैमिली मेंबर से बात किया, हर एक ही सवाल पूछता है कि राहुल का क्या कसूर था, उस छोटी बच्ची का कसूर था। आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो यही इंस्ट्रक्शंस होती है कि हमें उनको एक टारगेट मिलता है कि ये उनकी जो ये है कि मिलिटेंसी जिंदा रहे। इस वजह से वो ये टारगेट करते हैं कि कितनों को मारना है, क्या करना है उनको। जैसे वो संगठन में है, मिलिटेंसी संगठन में, उनको वही है कि ऑर्डर मिलता है कि आपको 4 मारो, 5 मारो और हिंदू मारो। वो क्या नेताओं का जब वो सियासत करते हैं, कोई कश्मीर फाइल्स को ब्लेम करता है, कोई जगमोहन को तब ब्लेम कर रहा था, आज भी वही ब्लेम चल रही है, लेकिन असल जड़ के बारे में कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान की बात नहीं करता, पाकिस्तान के आतंकवादियों की बात नहीं करता। आज भी घबराते हैं, कतराते हैं ये लीडर हमारे। एक्चुअली उनको तो वोट बैंक चाहिए। वो जो भी करते हैं अपने वोट के लिए करते हैं। दोनों पक्ष होने चाहिए उनको, क्योंकि हमारे भी वो भाई है, मुस्लिम भाई सारे तो ऐसे नहीं हो सकते बुरे। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बट मेन है उनको कि वो मिलिटेंट को टारगेट करे, उनको ढूंढे, उनका हाइड आउट देखे कि कौन उनके पीछे है, कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है, उनको कौन बना रहा है जो हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते हैं। वो ऐसा है। Without mincing words, all I can say that there is a clear-cut instruction from Pakistan's side. They want to wipe out footprints of Hindus and Hindustani. That's why that moment they started in early 90s, that is still continuing. We saw that few days back, Lashkar-e-Islam, that's an offshoot of Lashkar-e-Toiba outfit. They came out with a pamphlet. They said either you embrace Islam or you will have to leave Kashmir Valley. And today also we have seen that similar kind of pamphlets had been there. They are trying to blame Kashmiri Hindu community. They are trying to target them. They are trying to generate fear psychosis. Now the question arises, why all of a sudden again they have done that? See, one has to understand, a broader picture is there. Amarnath pilgrimages to start. That means Hindus from all over the country will be coming over to pay obeisance at shrine. They do not want to see footprints of Hindus. That's one of the reasons they're trying to generate fear psychosis. They're trying to generate fear by killing and by targeting Kashmiri Hindus, because there is hardly any security. They're like sitting ducks for them. That's one of the reasons today large number of people were out on streets. They were protesting at Budgam. They wanted to be on the airport road. They wanted to move towards Lieutenant Governor's side. That was the time when police resorted to cane charging. They even fired tear gas shell to disperse them. This is for the first time during the last 3 decades we have seen that the Kashmiri Hindus, they have come out on street and protested. But what is heartening is that the Kashmiri Hindu of 2022 is totally different from what we saw in 1990. In 1990, we saw them, they silently left their homes, and even after 32 years, they are living in homes away from homes. But this time, they said, "Aap ek Rahul ko maroge, ghar ghar se Rahul niklega." If you are going to kill one Rahul, every home is going to produce one Rahul Bhat. So Rahul Bhat is going to be symbol of resistance for many of the Kashmiri Hindus who were today out on street. They were protesting. They were said that Kashmir belongs to Hindus, they belongs to Muslims, they belongs to Sikhs. Kisi ke baap ki jaagir nahi hai, nobody is going to stop them from living there. So that is, I think, heartening thing, because they want to break their resilience. They want to shatter. Thank you, Pradeep, for giving us a detailed understanding, as you always do with these kind of sensitive stories. Appreciate your giving us perspective. But let's remember, those behind this killing are terrorists, and terrorists don't have religion. Terrorism is their religion. So it is something that we must keep in mind. Pradeep, appreciate your joining us.